kindly take your seats. Thank you very, very much. Ravi sir, you've had a fantastic journey bringing the Xenon Yodha to the Indian markets, bringing it here today to Mumbai. May I please request you to kindly say a few words on this journey and, of course, start the little chat with Mr. Kumar himself. Sure. Thank you very much. And what wonderful scenes to start of a very exciting year of 2017 ahead of all of us. So first of all, ladies and gentlemen, very big thank you for being here today and wish you all a very happy new year. We are meeting very early in the year. This is actually the second working day of the year. Typically, these are not days when we have business meetings, but that's because we have an action-packed year and very little time to lose. It's always great to see members of the extended Tata Motors family, people who have grown with Tata Motors, that includes our dealers and many of our employees. Over the years, many of you have seen some wonderful milestones of Tata Motors in its evolution. And today we have one more milestone in terms of somebody as prestigious and as capable as Akshay Kumar tying up with us. So thank you, Akshay. Welcome to the Tata Motors family. Thank you very much. So now I'm the member of this family, and जैसे कि आपको पता है कि member वाले जो भी कुछ मांगते हैं family को देना पड़ता है, तो मैं एक ट्रक मांगता हूँ टाटा वालों से मुझे एक ट्रक दिया जाए. So this is the benefit of being a family member. Am I right? Yes. Perfect. सबको एक एक ट्रक मुफ्त. आपको जरूर देंगे अगर आप अपने फिल्म में उसको यूज करोगे तो आपको जरूर देंगे. हाँ जी, फिल्म में बिल्कुल. तो पक्की बात है जी, मेरा वादा है कि हमें ट्रक दिया जाएगा, हम उसे फिल्म के अंदर डालेंगे, क्योंकि वैसे भी फिल्मों में कौन सा ट्रक यूज होता है? टाटा ही यूज होता है. चलिए सर, मैं अब रवि जी से एक सवाल पूछना चाहूँगा. सर, मैं आपसे एक पूछना चाहता हूँ कि सर, पूरी इंडस्ट्री में इतने सारे एक्टर्स हैं, आपने मुझे ही क्यों चुना टाटा के लिए? So I think this is a question which I've been asked a lot over the last few days. Even today morning we had some media interaction, and I think not only you, everybody is waiting to listen to the answer. So let me say that our starting point was not even that we need to use a celebrity. But over the years, especially the last 3 to 5 years, we have been continuously brainstorming to project a more dynamic and vibrant brand image for Tata. What are the things we need to do? So when the idea of a celebrity came up, we said, okay, try kar dete hain. So we said, let's do some research. So we did some research with our customers. Everything we do, including the product we are launching here, is based on the research and the feedback we get from them. So we started doing some research where we went to 16 cities, 10,000 members. But let me not do it like this. Let me do it filmy style. Let's see a film on what really went into selecting you as a... You made a film? Yes. Thank you, sir. Thank you very much. And let me tell you what happens when I told my mother that I have been associated with Tata. She became very happy. She became very happy because बचपन से ही टाटा का नाम सुनते ही दिमाग में हमेशा ये आता है, यार ये मजबूत चीज होगी, ये एक टिकाऊ चीज होगी, ये सस्ती भी होगी. सो इट इज अमेजिंग थिंग. आई टेल यू, मतलब वैसे तो मैं बहुत सारे एड्स करता हूँ, लेकिन टाटा का जब मैंने नाम लिया, अपनी माँ को बताया कि मैं अभी टाटा के एड्स करूँगा, उनके ब्रांड एम्बेसडर हूँ, उनके लिए मैं काम करूँगा, एंड आई एम गोइंग टू बी जॉइनिंग देयर फैमिली. शी बिकेम वेरी हैप्पी. दैट्स ऑल आई वांट. So just to complete the story on why Akshay, so we did this research over 16 cities, 10,000 people, and we put into the basket a set of 48 to 50 celebrities, both in the entertainment world as well as the sporting world. And we were quite prepared to actually take an answer that maybe doesn't work for us. But what was phenomenally surprising was the name of Mr. Akshay Kumar came up with an 88% fit to the Tata Motors values. So the story was extremely compelling. And I think each of us, if you think through what Mr. Akshay Kumar stands for,
And if you think through what Tata Motors stands for, I think the 88% is not an exaggeration. अंदर से लगता है कि this is right, and this is the right person for us to have. So Thank you, thank Raviji. you Thank for you. agreeing to our offer and joining us as a subsidiary. So how do you feel about this association with Tata Motors? Well, I told you about how my mother feels about the association, and let me tell you, the association, when I think that I am along with Tata, जब मैं टाटा के साथ अपना नाम सुनता हूँ, जोड़ता हूँ, मुझे अंदरूनी खुशी होती है, दिल से खुशी होती है. मुझे अपने बचपन के सारे दिन याद आते हैं. बहुत सारी चीज़ें जो मैंने देखी हैं, हमने बचपन से ही ये नाम हमेशा के लिए सुनते आए हैं. टाटा, टाटा ये, टाटा वो, टाटा ये, टाटा सॉल्ट, टाटा कोई भी, हर चीज़ में टाटा का नाम ज़रूर आता है. एंड आई डोंट नो, आई कैनॉट, मैं अपने आप को इजहार नहीं कर सकता हूँ, शब्दों में नहीं बता सकता कि व्हाट आई फील so हैप्पी अबाउट इट. आई फील कंप्लीट that such a big brand I get an opportunity for me to be engaging myself with such a big brand. So I feel, thank you very much. All I can say is, Ravi. Thank you very for much. these positive comments, and I think we really cherish the words that you said. And you've been now working with us over the last few weeks, shooting our commercials. And what has been your experience during these TV shoots? मैं आप लोगों को एक किस्सा बताता हूँ कि जब मैंने एड शूट कर रहा था तो they are very tough masters, I must tell you. ये लेके आए 4 ऐड 2 दिन में खत्म करने के लिए. 4 ऐड 2 दिन में खत्म करने के लिए, जबकि अमूमन ये होता नहीं है. And I had to even do a photo shoot. And I had to do about 8 changes plus 4 changes of the ads which I had to. Altogether 12 changes I had to do when I had to do this. And before I go ahead with it and I tell you, I'll just show you the first Yoda ad. And I want you to guys see it. It's very nice. It's a very family kind of an ad which I think I have enjoyed working in it. I hope you guys enjoy it. So, ladies and gentlemen, when I said in the beginning that the fit of Akshay with our portfolio is phenomenal, you saw 4 different films on 4 different categories. In every film, Akshay felt to be the most appropriate brand ambassador we can use. So whether it's a Yoda or an Ace or a Sigma or CV range, Akshay did not look out of place anywhere. He fitted in completely. Just shows the versatility he has, and we hope we have the same versatility to keep pace with you. Well, as I said earlier, I'm more happy than Tata people that I'm coming here. I'm more happy that I am associated with Tata. That gives me an immense pleasure to be associated with the Tata family. You guys, thank you very much for being here with me. So we have, just to give you a description of the audience here, besides, of course, the media men who are very prominent, we have a lot of dealers here. And I think the relationship with Tata Motors and dealers is something I want to spend just 2 minutes explaining. While we do add new dealers every year, but most of them sign up for life. There are many dealers here who are 3rd generation. They became dealers in the 50s. Probably their grandfather became a dealer, then their father became a dealer, and today the new generation is taking over. And I think Tata Motors would not have been where it is today without the support of our dealers. So give all of yourselves a fantastic round of applause. And this is almost an entry barrier for competition. When competition is interested in India, they are trying to nibble, but our dealers and the relationship we have is something which is critical for us. Now I know many of them want to talk to you. You probably want to talk to them. So maybe I'll just move out of the way and the floor is between you and the audience now. Thank you, Ravi ji. Thank you very much. वैसे बिल्कुल सही कहा है कि टाटा के साथ एक बार जो जुड़ जाए
वो हटता नहीं. मैं इस गाड़ी के अंदर आया हूँ and the guy who was driving me, Mr. Khan, क्या नाम है आपका? शबाज खान. तो ये मुझसे बात कर रहे थे क्या, क्योंकि 5 मिनट मैं पीछे गाड़ी के अंदर ही बैठा हुआ था. एंड ही वाज टेलिंग मी कि कितने सालों से ये टाटा के साथ, कितने सालों से आप हैं? 13 साल से ये टाटा के साथ हैं और कभी सोच भी नहीं सकते कुछ और करने के लिए सिवाय टाटा के साथ रहने से. एंड दैट शोड अ लॉट ऑफ ग्रेटनेस. थैंक यू वेरी मच. तो चलिए अब मैं तो बहुत सारी बातें कर सकता हूं, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आप में से कोई मुझसे कुछ पूछना चाहता है. पहले से तैयार है या कि मतलब इनको पता था कि मैं ये बोलने वाला हूं. Could we have a mic, please? Akshay here. Yeah. Hello. Where are Yeah, you? yeah. Good evening to all. This. Oh, Just Akshay, raise you're your there, hand. you're Akshay. there. Raise your hand. Okay, yeah. Hello. Yeah. Is good your evening. name Akshay as well? Yeah. Oh, wow. I like Akshay to ask. calling Akshay. Okay. But are you a dealer or a journalist? No, or- I am from media. You're from media. Yeah. Okay, sir. I like to ask you that मुंबई में ट्रैफिक बहुत बड़ी समस्या है. अगर इस मुंबई में ट्रैफिक को ऑड एंड इवन स्कीम लाया जाता है तो आप उसके फेवर में होंगे कि नहीं होंगे? हम आपकी राय जाननी है. सर, आप मुझे पॉलिटिक्स में क्यों घसीटना चाहते हैं? लेकिन ऑड एंड इवन का जो है चक्कर, ये डीलर्स के अगेंस्ट है. इसके बेनिफिट्स भी हैं, नॉट बेनिफिट्स भी हैं. सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू आंसर दिस बिकॉज व्हेन आई गो टू दिल्ली एंड आई हैव स्पोकन टू लॉट ऑफ पीपल, सो सम पीपल आर इन फेवर, सम पीपल आर नॉट इन फेवर. सो इट इज अ वन क्वेश्चन दैट आई मीन the answer has to be a little bit both the sides. I don't know where to go. So if you guys, if you want to इनके कोई क्वेश्चन को किसी को जवाब देना है तो हाथ खड़े कर लीजिए भैया. Who are in favor? So जी एक ही आदमी है. Who are not in favor? हाँ जी हाथ खड़े कर लीजिए. क्या हो गया? Yes मैम, आपके साथ मैं बाद में बात करूँगा. So, Akshay, yeah. So, I will. sorry, sorry. I'm just interrupting you for half a second. But honestly speaking, this is going to be a chat between our dealer partners, our customers, and Mr. Kumar. The rest of the forum will be open for our members of media separately, and we do have place for that. So, if I may make a small little request, could we first give the opportunity to our dealer friends, our customers, to finally to have a conversation with Mr. Kumar after your questions. After this formal session, Yeah, we will after go this to another we room. have- yeah, we and have we'll have time the for media interactions. But Okay? after your question, of course. Oh, yeah. Thank you. So, Akshay, I would like to go forward Mr. Ravi's answer to your question. Exactly, I think you are the human version, you are the human version of machine. And the way your career has shaped, that is the best example of a Yoddha. Did you call me Carrier did you call me a machine? No, he called you a carrier. Yeah. So, जैसा कि अभी किसी ने बोला कि आप बेस्ट एग्जाम्पल हैं एक योद्धा के, द वे योर कैरियर हैज शेप्ड अप. आपके लिए योद्धा का क्या डेफिनेशन है? बिकॉज नॉर्मली यू नो द काइंड ऑफ assumption वी हैव फॉर अ योद्धा इज अ मैन होल्डिंग अ गन एंड डूइंग impeccable, not gun, it's gun. Gun. So not necessarily he's holding a gun. He is holding his fort. He's holding his life. He's holding his family. It is not necessarily योद्धा मतलब not necessarily कि सिर्फ soldier जो war के लिए जाता है वहाँ ही हो. It is all about even being with the family, holding on to your family, holding on to your company. So that whole thing is also in the sense of योद्धा only. So मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब आदमी कोई कहता है यार ये तो योद्धा किस्म का आदमी है. He's a warrior. चाहे कुछ भी हो जाए जिंदगी में, इस पे ट्रस्ट रहता है, इस पे यकीन है, ये कभी हमें धोखा नहीं देगा, ये हमेशा साथ रहेगा. So that is a big responsibility. And today Tata company, Tata Motors are offering you a Yoddha, which I can also say I believe in it and I trust with it. Thank you, sir. Thank you for your question. May I please request our dealer friends to ask the next question? Yes, young lady, you've got a question. You want a picture with Mr. Akshay? That's a question. That's her question. So now only that age group is possibly allowed. Not everybody else. I also want a picture with him. So this is.
Daddy is ready, sir. The Yodha is ready. Thank you. Happy New Year. After this question, do we have any other questions from our dealer friends, please? Please raise your hand and we'll make sure the mic reaches you, or I could. Is there anything like that कि dealers are not going to ask the question? Are they scared? Are they Or shy? is They're it shy. He's just like fixing his hair and shyness? everything. Or अगर मैं is सवाल there no पूछ लूँ question? तो- Okay, चलो मैं पूछ लेता हूँ. Should I ask? कौन जवाब देना चाहेगा? Sir, इन्हीं Sir, से would you पूछ like लेते to हैं. stand up, sir? Yeah. What's your name? Can he have the... Yeah, we'll get him a mic. Could we please have a mic? Yeah, mic Sir, is एक here. second. Sir, इनके लिए sir mic please, if you don't mind please. हाँ? I want it back. हाँ ठीक है. थोड़ा mic pass कर देंगे sir please. Lady, okay. Dealer बंधु, कितने अच्छे हैं आप. Sir, मगर थोड़ा stance पहले ले लीजिए. Sir, आपका नाम क्या है? अमित तुलसियान, कहाँ से हैं आप? वेस्ट बंगाल. आपके और आपकी बीवी में योद्धा कौन है? बीवी, बीवी क्या करती हैं? हाउसवाइफ. हाँ? हाउसवाइफ. हाउसवाइफ. तो योद्धा उनको क्यों बुलाया आपने? बेटर है बुलाना. बेटर है बुलाना. बिल्कुल सहमत हूँ. मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ. मेरा भी यही हाल है. इसमें you don't have to feel shy at all. At all. बैठ जाइए. Thank you. Thank you जी. Thank you कुछ Amit. आप पूछना चाहेंगे कुछ? सर ने आपसे पूछ ही लिया है. काफी कुछ. Still, we feel, as sir rightly said, you are definitely a perfect match of between Tata Motors and your Yodha. My योद्धा. You are a Yodha. So it's, I am a योद्धा. And your Okay. Thank you. Thank you, guys. Thank you. Thank you, Just, Amit. just pass the mic to जी him. हाँ. अमित यहाँ पे दे दीजिए mic. myself नाम अर्पित बताएं. नाम बताएं. अर्पित खंडेलवाल. तो जैसे आप Where, यहाँ from पर where are you? कहाँ से हैं आप? मैं जयपुर से हूँ. जयपुर के पास एक टाउन है महुआ. तो आप जैसे टाटा मोटर्स के लिए नए हैं, मैं भी काफ़ी नया हूँ. मेरे फादर का बिजनेस है, तो मैंने भी अभी रिसेंटली ज्वाइन किया So है. fathers आपके सर आपके फादर साथ में हैं? हाँ. जी आपको कितने साल हो गए हैं? 10 साल हो. 10 साल. आपको तो माइक की भी जरूरत नहीं है. आपके तो अंदर ही कॉन्फिडेंट पहले से ही है. हाँ जी पूछिए. तो अक्षय पाजी, मैं एक चीज़ खुद पूछना चाह रहा हूँ, बिकॉज हमारे पास कस्टमर्स आते हैं, तो कस्टमर्स पूछते हैं कि भाई ये गाड़ी कैसी है. फिर फाइनली बात आती है प्राइस पे. तो जब आपके पास भी कई सारी गाड़ियाँ हैं, तो आप जब क्या रिप्रेजेंटेटिव आपके पास आते हैं या आप शोरूम पे जाते हैं, क्या आप भी नेगोशिएशन करते नहीं यार 5% नहीं, मेरे को 10% डिस्काउंट चाहिए? जी आप बताइए. सच कहें तो मैं अच्छा लगूंगा. मैं अच्छा लगूंगा किसी से बोलते हुए यार 10% कम कर देना यार. समझा कर बात को. डीमोनेटाइजेशन हो गई है यार. कैश का प्रॉब्लम चल रहा है. कैश का प्रॉब्लम मुझे नहीं है, लेकिन वैसे मैं बता रहा हूँ. लेकिन मैं अच्छा नहीं लगूंगा जी बात करते हुए. तो फिर जो वो जैसा कहते हैं और जो प्राइस होती है तो मैं उसमें गाड़ी ले लेता हूँ जी. चलिए, थैंक यू. ओके. Sir, but then you said at home, Mrs. Kumar is the Yodha. Does she ask for the 5%, 10%? No, not at all. Not No, at even all, she not at doesn't. all. Okay. She doesn't do. Thank you. Do we have any more questions? Sir, वहाँ पे Yes, go एक ahead. सवाल. हाँ जी. Hi, my name is Shubham. I'm coming from Azamgarh. Single Motors, my dealership का नाम है. Okay. I'm a big fan of yours, Mr. Thank Kumar. you, ji. Thank you very much. Just a simple question. Out of all the commercial vehicles that you would have seen in Tata Motors, which one you thought is the most reliable and most? See, everything it depends on what kind of work you want to do. Okay, so it is not everything in Tata's as reliable. I think Tata's itself goes through a lot of tests. जैसे उन्होंने मुझे चुना बहुत सारे टेस्ट लेने के बाद, वैसे ही जो भी vehicles वो लेते हैं लाते हैं, they go through a lot of tests and then they allow the product to come on roads. So I think that's what I think. Okay. Thank you. Thank you, ji. Thank you. I have a question here. Thanks, Shubham. हाँ. हाँ, sir. It's to Mr. Kumar and Mr. Pishrodi both. Sir. Since the association of Mr. Akshay Kumar is very new with Tata Motors,
I request Mr. Pishrodi and Mr. Akshay Kumar to at least get our brand ambassador to visit all state capitals if possible. It will be a fantastic brand building activity. Well, I don't deny that that should be done. And on the contrary, just now, I was discussing with him that they have this award night, sir. The annual dealer conference. We have an annual dealer conference where we give away awards. And we were thinking, for instance, this is the Yodha launch. We will, the dealer conference is usually held in May. Mr. Kumar also asked, where is it held? When we said it may be outside India, he was quite excited about it. not that he lacks opportunity to go outside India, but we are thinking of an award ceremony for the best Yodha performer of the year, which we'll announce in due course. And who else but Mr. Kumar to hand over that? Well, that will be my pleasure. So that answers your question. और आप लोगों ने एक डायलॉग तो सुना होगा मेरा जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूँ तो मैं एक बात आपसे किन से मैं पूछना चाहूँगा जनाब आप yes you no you can somebody give him a mic sir Yes, what's sir. your name sir My name is Bijoy. sir are you with Tata or you just visiting no, us I'm visiting and I belong to the banking fraternity. so you're not with Tatas yet No. so you're just coming in sneaking in Yeah, no. So there are other colleagues of mine from other Yeah, banks yeah, who yeah. probably are also sneaking in. Okay. So, sir, let you know, there are a lot of sneakers also here. Yeah. So, chaliye, would you like to ask me a question? Because I wanted to ask someone who is along with Tata. Actually, the question that I had in mind, one of my colleagues here has already asked कि घर में आपके योद्धा कौन है तो वो तो आपने खैर बोल ही दिए हाँ जी, वो तो सबका ही जवाब है यहाँ. यहाँ कोई है जो उल्टा बोलना चाहेगा? मैं अपने घर का योद्धा हूँ. सर उसके लिए कैमरा उनकी शक्ल पे होना चाहिए. बिल्कुल होना चाहिए. There are some ladies here, they may say it. They are obviously yodhas. Yeah. So my question is, in the fleet of cars that you have at home, are you going to add a Tata or do you I've already have a already Tata? asked in the first thing I came here and asked for a free Tata truck. Even I don't know what I'm going to do with the truck, but I will remove something or the other. But you have used a lot of trucks in your movies. Yes, I have. Boss I have is done, one of them. I have done a lot of work with Tata trucks and a lot of stunts also. I've done one stunt I remember, jahan maine, please don't try it at all. I'm just saying it because that I did with a lot of rehearsal. I had taken a car and come under a truck, and while the truck is moving at the 50 kilometers per hour, and I brought my car in between it, and because I knew agar wo truck ruk jati apne aap, but it was Tata, so I was very confident about it, and I got it, and I did that movie also. I'll tell you, it was called Saput. So that stunt, I remember, it was one of the worst stunt I could ever do. That never ever try that thing again. Thank you. Thank you, sir. So we'll meet you and your colleagues later. No, at coffee. I saw a lady there trying to ask a question. So maybe we should give that first. Hello, sir. I am Surbhi. I'm coming from Pune, from plant facility. So I have a question. You told about your comment that what you gave when you told your mom about your, association with Tata. What she commented. I'm really, excited to know what was the comment from Twinkle Khanna. And she was like very witty and yeah. Well, sir, very honestly, you should answer. Well, honestly, चाहे आदमी कितना भी विटी हो, चाहे कोई भी कितना बड़ा critic हो, I don't think so there's any critic who has ever said anything against Tata. It's true. Thank you. Okay. Because first of all, I don't think Tata gives किसी को कोई ऐसा कोई मौका भी देता है कुछ बोलने के लिए. Everybody knows what Tata That's is. so wonderful, sir. Thank you. Thank you. And well, I guess, sir, we've got time for one last question and then we'll have to wrap up. So either it's the question or Okay, it's this the is a resolution. New Year resolution. आप में से कोई who is along with Tata family here? Sir? You? Sir, yeah. So what is your New Year resolution for Tatas?
जो वो ऐसा ऐसे कौन सी चीज़ है, जैसे मैंने वो डायलॉग बोला था, जो मैं बोलता हूँ वो करता हूँ, जो मैं नहीं बोलता तो वो तो मैं डेफिनेटली करता हूँ। आप ऐसी कौन सी चीज़ करोगे जो डेफिनेटली करोगे, जो बोली भी नहीं हो आपने, जो आज बोलना चाहोगे? टाटा स्टैंड फॉर दैट। जो बोलते हैं वो तो होता ही है। आप क्या बोलते हैं? नहीं, जो नहीं बोलते वो भी करते हैं वो टाटा। तो इस वास्ते माय रेजोल्यूशन इज टू रिमेन विद टाटा। Okay, my resolution is to remain with Tatas. Okay. Anybody else? So I guess That's it? yes, sir, that's Now it. there is a one guy पीछे One वो person. खड़ा हुआ उधर. Oh, and Okay, so last. we had, and so one person there, sir. Yeah, okay, one person there, and one person. Your last two questions, and that's it. Sir. अक्षय Thank you. साहब, जब आप ट्रैवलिंग पे जाते हैं, हाँ पंजाबी पूछ लो भाई, नहीं कोई बात नहीं, जब आप ट्रैवलिंग करते हैं या लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, अक्सर लोग डिस्टर्ब करते हैं हॉन्किंग के साथ ही, कभी कभी कोई लोग गालियाँ भी निकाल देते हैं, कोई गुस्सा करता है, आपका रिएक्शन क्या होता है, आप क्या कहते हैं उस समय में? मेरा रिएक्शन नहीं, मैं समझा नहीं, आपका प्रश्न नहीं समझा क्या? जब आप ड्राइविंग करते हैं या जी, मैं ट्रैवलिंग पे ड्राइविंग जाते कर रहा हैं, हूँ, okay. कई बार हॉन्किंग होती है, डिस्टर्ब करते हैं बहुत लोग, Honking कई लोग गुस्सा करते हैं, गाली भी दे देते हैं, वो गाली देते तो आपको कैसा फील होता है उस टाइम? आप तो मुझे तो नहीं दे रहे होते क्योंकि मेरी ड्राइविंग अच्छी हो रही होती है। मेरे पास इंटरनेशनल लाइसेंस भी है। तो आप डिस्टर्ब नहीं होते? हाँ जी, क्या देखिए, अभी अनफॉर्चुनेट है कि हिंदुस्तान में हॉन्किंग जो है ये बहुत होती है। इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग, क्योंकि हॉन्किंग की जरूरत नहीं है। बट आई होप अब इसे देयर कम्स अ रूल, ऐसा कोई रूल आए जहाँ हॉन्किंग सख्त, मतलब एक उसमें कोई जुर्माना होना चाहिए, बिकॉज इफ यू हॉन्किंग फॉर नो राइम और रीजन देयर कैन बी सम काइंड ऑफ अ रूल। हाँ यस, रोड रेज बहुत होता है, दैट यू सी इट, यूट्यूब पे भी देखते हो, कई जगह पे आप देखते हो कोई किसी को गाली दे रहा है। मेरे साथ एक ही बार मेरे साथ हुआ था, मैंने एक ड्राइवर को देखा था वो गुटखा वुटका खा के पान की पीक थूकते हुए, एंड आई गॉट वेरी अपसेट अबाउट इट। मैं अपनी गाड़ी से आके उससे मैंने बात भी की थी, उसको झाड़ा भी था। देन आई हैड अ लिटिल रोड रेज विद हिम बिकॉज आई डिडंट लाइक द फैक्ट दैट ही हैड टू स्पिट आउट जो खा रहे थे, बिकॉज उससे बीमारी फैलती है। मैंने उसको शायद यूट्यूब में डाला भी था, सॉरी अपने ट्विटर पे डाला भी था, बहुत पहले की बात है। So that is the maximum thing I have ever had a road rage with. Good, thank you. Thank you, sir. Thank you very, very much, Mr. Kumar. Last question, and then Yodha has to make an exit. So. मेरा नाम विनय है और मैं टाटा मोटर्स में जॉब जी करता विनय जी हूँ बोलिए। और बिहार में जॉब करता हूँ। कहाँ जी? बिहार? बिहार। ओके। और मेरा क्वेश्चन ये है कि सर आप तो कमर्शियल गाड़ियाँ खरीदते नहीं हैं, मतलब आपका उस लाइन से कोई एसोसिएशन नहीं है, जनरली कार खरीदते हैं। आप कमर्शियल व्हीकल्स नहीं आप खरीदते नहीं हैं कमर्शियल व्हीकल्स, आपका डायरेक्ट आप तो पैसेंजर कार्स खरीदते हैं, मतलब आप कार खरीदते होंगे। और अभी ये जो गाड़ी है कमर्शियल, ये हम जब कस्टमर को देंगे तो कस्टमर योद्धा गाड़ी देंगे, तो इसमें आप एक लाइनर, पंच लाइनर ऐसा क्या आपका रहेगा जो मुझे बोलना है बिहार में जाकर और ये गाड़ी बेचनी है? जी मान लीजिए ये गाड़ी आपको बेचनी है, तो आपने बोला सर देखिए, यहाँ कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जिसको कामयाबी नहीं चाहिए, और इसके अंदर बोलना ये है कि कामयाबी हर कदम कामयाबी है आपके, क्योंकि आपके पास एक भरोसे वाली चीज़ है, एक ऐसी चीज़ है जो आपको धोखा नहीं देगी, आपके हमेशा साथ रहेगी। सो कामयाबी हर कदम ऐसे करके आपको बेचनी है, लोगों को गाड़ी देनी है। एंड वैसे मैं आपको बताऊं, ज़्यादा कन्विंसिंग करना नहीं है, सिर्फ नाम आपने योद्धा भी नहीं बोले, टाटा बोल दें तो वो काफ़ी कन्विंसिंग है। वैसे सर जो अभी जब हम लोगों ने ऐड देखा था तो हम आपस में कलीग बात कर रहे थे कि शायद आपका ऐड देख के और आपका नाम लेके शायद मुझे लगता है कि अपने एंड से हम लोग 25-30% सेल तो कुछ बढ़ा लेंगे योद्धा का। सर 25-30% सर। थैंक यू। सो पूरा तैयार रहिए, गाड़ी भी ऑर्डर करके रखिए जी। सिर्फ यहाँ पे नहीं, ऑर्डर भी दे दीजिए। Ladies and gentlemen, Ravi sir, Akshay sir, let's give them a huge round of applause. A very happy new year. थैंक यू वेरी मच। और मेरे परिवार की तरफ से आप सबको और आप सबके परिवार को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।